आवाज़ मंदी। Good evening, guys. Yeah, I'm really sorry. I I am slightly late, but I couldn't get up on time. Hi, Vansh. Can you guys hear me well? Coding Jesus. Hi. Hi, Mohammed. I'm good. How are you? Okay, so start asking your questions, guys. What do you want to talk about? Sir, I send you message 1 week before. Please reply to it after live session. Here, where did you send it? Hi, Vishal. टेक मिलियंस यार कहाँ पे सेंड करा था मैसेज? आई डोंट नो इफ दैट्स यू. Update learning Docker. Nice. That's good. Start asking questions, guys. Let's get into it. I just replied. Maybe it's you. Hey, I'm working on non IT. Suggest me best plan to learn and manage work, and for how many days I get to master in a skill managing my job. यार देखो, there is no set timeline कि मैं तुम्हें बताऊं कि this is how long you should take before mastering a skill, but the goal is you should be able to spend time and figure out that, okay, now I'm able to do these things, comfortably. Now I can start tackling more complex tasks. But normally if you want to do something, you have to spend like 5 to 6 months in order to learn it properly. Anish Ghosh is asking, is freelancing now saturated? I don't think it is, because people still need talented individuals, and I guess now they want talented individuals more than ever, because now companies don't have a lot of money to onboard someone full time, expect them to spend a month reading about their code base. Freelancers are usually expected to come on board and start spitting code and building features from day one. So I guess it's not saturated. We have to practice JavaScript questions without DSA. The goal is to enter into IT industry ASAP. यार देखो, ये ASAP वाली वो मत करो कंडीशंस ना, बट आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ से तुम पढ़ सकते हो. ठीक है, लेट मी सेंड अ लिस्ट. मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सो यूल हैव टू स्पेंड टाइम. JavaScript questions. मैं रिसोर्सेज वाले चैनल में सेंड कर रहा हूँ, तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर, एंड या दैट विल बी गुड इनफ. अगर तुम वो सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो यू वोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. ओके, व्हाट एल्स? एक सेकेंड, आई विल गेट टू द स्क्रीन इन अ बिट. एंड मैं यहाँ चैट में भी डाल रहा हूँ, तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हेयर एज वेल. ओ आई गेस सारे लिंक्स नहीं आ पाएंगे यार. Hi, any other questions? Vanch, Muhammad, anyone of you, if you want to ask anything?
Oh, my stream is not working. Mm. Oh, let me send a Discord invite link here. You can use this link to join the Discord. Use this link to join Discord, and in the resources channel you can find it. Uh, what else? Just tell me, how can I know that I can be, how can I be confident? Just tell me, like, if you build some full stack application, you're good to go, and tell me like that. Okay. If you wanna understand in terms of that, uh, here देखो, start with uh, easy projects. For example, building a full stack application for it. By the way, I don't think you should go full stack in the beginning. You should just focus on front end or back end first, and then try to go full stack once you're really confident about one. But let's say if you were to build an application like that, what you should do is you should build applications like to do application, then let's say time management application, expense tracker application, these basic stuff, and then try to make it more complex. मोहम्मद से, सर मैं लास्ट वीक से जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और टॉपिक को डीपली रिसर्च कर रहा हूँ, लाइक के इनर थिंग्स कैसे वर्क कर रही हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ, क्या राइट पाथ है? हाँ यार, इट इज़ द राइट पाथ. एंड देखो यार, मतलब ऑल दो देर इज़ नो टाइम कंस्ट्रेंट्स के मैं कहूँ कम से कम 6 घंटा पढ़ो, 7 घंटा पढ़ो, बट हाँ, द मोर यू रीड द मोर फ्लुएंट यू बिकम. तो जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना बढ़िया है. बट हाँ, यू आर ऑन द राइट पाथ. भैया मेरा CGPA बहुत कम है और फोर्थ सेम में मेरा CGPA 6 है. मन स्टैक थोड़ा बहुत आता है, क्या करूँ? यार देखो, नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट योर CGPA. सच बता रहा हूँ. मतलब नो बडी केयर्स के मतलब तुम्हारा कॉलेज में क्या स्कोर था. ये जो कुछ मास हायरिंग वाली कंपनीज हैं, इन्फोसिस, TCS और केप जेमिनाई, कॉग्निजेंट, दे डू केयर अबाउट इट कि हाँ भाई तुम्हारा CGPA 7 या 8 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट नो बडी एल्स केयर्स. जो अच्छी कंपनीज है, दे रियली डोंट केयर कि मतलब तुम्हारा कॉलेज में क्या स्कोर था, अनलेस यू आर प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स. तो आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट CGPA. हाँ, डोंट गेट अ KT/बैक इन एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो फिर इट्स अननेसेसरी हेडेक. बट हाँ, इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, एंड देन कीप फोकसिंग ऑन योर स्किल्स. मुझसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, टू डू लिस्ट वेदर ऐप. हाँ, मतलब ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाओ कि एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, ठीक है, देन ग्रो इट टू लेट्स से थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. बट हाँ, कीप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू मेक यू मोर फ्लुएंट. What else? There was a guy who wanted to ask something. Let me ask him. There is a guy in our Discord called Shreeman45. Is he in the live? If yes, then I think he might also want to ask some questions. Okay, guys, so what else? We shall need more JavaScript project idea to strengthen hands-on JavaScript. Here it depends ke what stage are you in. Plus, is it just JavaScript or are you also building things using React वगैरह. So if you're just building using JavaScript, so what you can do is what can you build? Let me think.
ये फॉर्म हैंडलिंग वगैरह ये सब बना के देखा करो जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। यूज़र नो ऐसे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। आई कैन गिव यू सम मोर आइडियाज़ एज वेल। क्विज एप्लीकेशन बना लो एंड ठीक है, हाँ मतलब ऐसा करके कुछ। देन यू कैन ऑल्सो बिल्ड एन ऐप जहाँ पे लेट से लेफ्ट में मैं एक तुम्हें टॉपिक का नाम दूँ एंड देन ऑन द राइट देर इज़ अ बॉक्स टू राइट योर कोड एंड देन फिर तुम उसे वैलिडेट करो कि इफ़ दिस कोड इज़ द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बट ठीक है छोड़ो अभी के लिए। यूज़र नोन से भैया करियर गैप है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं यार, मतलब देखो बॉटम लाइन इज एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू योर स्टफ वेल, यू आर रियली स्किल्ड, नो बडी केयर्स के करियर गैप था या फिर तुम्हारी कॉलेज में क्या परसेंटेज थी। तो ये मनीष सितोलिया से विल एआई रिप्लेस डेवलपर्स? इट विल, बट इट विल ओनली रिप्लेस दोज इंजीनियर्स जो कि मतलब बहुत एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, जिनको बस ये है कि थोड़ा बहुत सीख लो एंड दैट्स इनफ, उनको रिप्लेस करेगा। One says, for me, KT back really is a headache since I have to take out time for that sub daily too. Yeah, that's true. मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि KT बैक से बचो, बट परसेंटेज कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी सर जस्ट टेल मी लास्ट स्टेज प्रोजेक्ट्स दैट मीन बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू टू अ रिमोट जॉब लाइक योर्स, what are projects to make at least? I'm really confused on that. अच्छा यार, रिमोट जॉब्स के लिए तो यार मतलब यू हैव टू हैव रियली गुड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके लिए मैं जैसे कहूँगा कि जैसे एक वो मैं सहाय वाला कम्युनिटी प्रोजेक्ट बता रहा था कि दैट विल बी अ रियली गुड यू नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू कैन डू। वो एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। बिल्ड समथिंग यूजिंग एआई के फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी बोल रहा था कि लेट्स से आई हैव अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन जावास्क्रिप्ट, user types in a piece of code and then you use AI to figure out whether this piece of code correctly represents this topic. For example, let's say मैंने कहा कि there is a topic called currying in JavaScript। अब मैं कह रहा हूँ currying के लिए कोड लिखो, तो जो एंड यूज़र है हु इज़ गिविंग द इंटरव्यू उस प्लेटफॉर्म पे जो हमने बनाया उसमें ही विल टाइप इन अ कोड, हम उस कोड को वैलिडेट करेंगे वेदर दैट कोड इज़ अ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करिंग और नॉट। तो दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट राइट। सर मुझे एक चीज़ में कन्फ्यूजन है कि मैं सीख तो रहा हूँ चीज़ें, लेकिन जॉब फाइंड कैसे करनी है और किधर मैं अपना प्रोजेक्ट को पोस्ट करूँ और किस लेवल तक का जॉब का लिए अप्लाई करना मन स्टैक। यार देखो, इफ़ यू आर इन कॉलेज तो यू कैन सेफली अप्लाई फॉर जॉब्स विच इधर आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स या फिर जो 0 to 1 year वाले गैप में है, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट्स को तो देखो लिंक्डइन पे डालो, अपने गिटहब पे डालो, वीडियोस अटैच करो प्रोजेक्ट्स के साथ कि दिस इज़ व्हाट द ऐप डज, उसके बारे में रीडमी बनाओ, फिर वो पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब वाले पेज को, रीडमी वाला जो पेज होता है उसे तुम डालो गिटहब पे कि बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, इट डज दिस, इट डज दैट, ऐसे ऐसे करके। एंड दैट्स द वे टू डू इट। जॉब कैसे फाइंड करनी है, तो जब ये तुम थोड़ा सा ठीक है, यू हैव सम मोमेंटम कि तुम हाँ करने लग गए हो, यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स, जॉब की हम तब बात करेंगे। इट्स नॉट वर्थ इट टू talk about and have the headache of finding jobs. Itachi says, brother, I have interest in blockchain technology for its product side. Would you recommend some high quality books or articles to learn about it as new developers? यार ब्लॉकचेन में एक तो एक्चुअली ना यार काफ़ी कम कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, बट बुक्स यार एक आई थिंक हार्वर्ड का है वो, एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोर्स है, यू कैन वो देख सकते हो, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल है वाइट स्पेस क्रिप्टो करके, वाइट बोर्ड क्रिप्टो करके, वो देख सकते हो। तो ट्राई दीज चैनल्स एंड फिर देखते हैं। व्हाट थिंग्स टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन फॉर बिल्डिंग अ नेटवर्क एज बिगनर? यार अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करो, और मतलब यार देखो लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया राइट, तो यू कैन पोस्ट योर करियर गोल्स कि ठीक है आज से 6 महीने बाद ना मेरे को लेट्स से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मैं अपनी हर वीक की प्रोग्रेस पोस्ट करूँगा, बिकॉज डेली माइट बी हार्ड टू डू। आई डोंट नो हाउ डिसिप्लिन यू आर, बट डेली तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव लेट्स से वीकली प्रोग्रेस कि वीक 1 इस वीक में मैंने ये करा, दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड इन दिस वीक, दिस इज़ व्हाट आई बिल्ट, दिस इज़ द वीडियो, ऐसे करके। एंड यू कैन कनेक्ट विद फोक्स
And usually when people see content like this, they will engage. Itachi, according to you, what will be the big thing, blockchain or fintech? Yeah, fintech though has always been a thing. I don't think it's anything new. Blockchain is a buzzword, right? It is foundational work. It is going to last for a very long time. But I don't really care about these buzzwords unless I am building my own startup, right? So, if you're planning to build a startup, you should definitely follow these buzzwords and try to ride the wave. But otherwise, I don't think it matters much. Crick Club says, "Sir, hi sir, my name is Shriman. I started, Shriman. I started with web dev exactly 6 months ago. I grinded a lot from morning to night in web. I solved around 10-15 assignments on Internshala, but got nothing shortlisted. I am 2024 grad." That's bad, यार. मतलब if you didn't get shortlisted, but ठीक है, I'll connect with you. Can you send me a message on Discord or my WhatsApp if you have my details? So we'll connect and I'll see what I can do. I've started getting into full stack. Currently doing CS50. यार, don't do it. It's not worth it for full stack. What do you think about it? So it's really not worth it. In turn, यार देखो, it depends on how good you are. It really depends on how good you are. I don't have a salary in mind, but like if you're really good, then I can pay you whatever you want. And when I say whatever, I mean I can pay you some really good numbers. But you have to be really skilled um, before we get into that conversation. Uh, just tell me when I need start applying for remote job. Don't tell me when you're confident. अच्छा, चलो यार, इफ़ यू आर रियली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू, वो कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट है. देर इज़ वन आइडिया जहाँ पे पीपल शुड बी एबल टू रजिस्टर. एंड जब तुम वो प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग. सो लेट्स डू दैट. आई थिंक दैट्स अ गुड चेक पॉइंट फॉर यू. एक वो कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट है. यू कैन आस्क एनी वन इन द डिस्कॉर्ड फॉर व्हाट दैट प्रोजेक्ट इज़ अबाउट. ठीक है. I've also dropped some ideas about it in the internal project channel. So if you want, I can add you to that channel, and वहाँ पे I can share more details. ठीक है. And this is the project that I'm talking about. Just tell me, how can developer you think he is good, like build some website scripts. हाँ, मैंने ये तुम्हारे को लिंक दिया ना, इस लिंक को पढ़ो and try to build this project. If you can build it, I'll hire you. One says, what mindset should we proceed with when we start a job, like within a year? My take is to master that one skill I'm gonna utilize for the job role. Yeah, that's true. कि अगर तुम्हारे को बैकएंड में जाना है तो बैकएंड की स्किल्स को बहुत अच्छे से सीख लो. देर आर सम रियली गुड चैनल्स, मैंने लास्ट स्ट्रीम में भी शेयर करे थे, लाइक हुसैन नासिर है एंड और भी बहुत सारे बैकएंड इंजीनियर्स हैं. तो तुम उनके कंटेंट को पढ़ो, देखो वो क्या सिखा रहे हैं, उसको अच्छे से सीखो एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है. गणेश से मैंने बता दिया ऑलरेडी. राधे राधे से, सो फॉर गेटिंग इनटू फुल स्टैक विच रिसोर्स कैन बी द बेस्ट. फुल स्टैक के लिए यार, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स तो देखो मैंने सीखा नहीं है कभी. बट हाँ, यू कैन फाइंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. जावास्क्रिप्ट के लिए देर आर वेबसाइट्स, मैंने भी ऊपर लिंक भी शेयर करे हैं. मोंगो के लिए देर डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली गुड. रिएक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, रिएक्ट के लिए कोर्स है. तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो. CS50 वर्थ है क्या इंटरमीडिएट के लिए? मतलब बिगिनर के लिए आई वुड से 100%, इंटरमीडिएट के लिए हम 50-50, और एडवांस के लिए तो इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट. कम्युनिटी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, मतलब इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड तो मोहम्मद बिल्ड तो करना ही है. तो इफ़ यू गाइज हैव टाइम एंड इफ़ यू वांट टू डू इट, तो वी शुड बिल्ड इट. और बट हाँ, मतलब आई हैवंट रियली रिसीव्ड अ लॉट ऑफ enthusiasm for building it. But let me drop a text in the Discord if people want to build the community project. Do you want to contribute to the community project?
Okay, I left a message in Discord. If enough folks reply over there, then I will set up the project today. मैंने कर भी दिया था, but आज मैं थोड़ा सा और उसमें कोड डाल दूंगा, and then you guys can start working on it. And I can set up another call to all the folks who are interested in building it, and मैं तुम सबको onboard कर दूंगा. Are we getting any more questions? If not, then I can just call it off in like 5-10 minutes. How a good portfolio looks like, I mean, I don't know. There are many good portfolios out there. You should check out mine if you haven't. I don't know whether it's good or not, but I will say it's decent. सर ये जो आपने लिंक शेयर किया है प्रोजेक्ट का, और अगर इसे कंप्लीट कर लेता हूँ तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हायर कर लेंगे. हाँ, मतलब इफ़ यू रियली, अगर तुम ये प्रोजेक्ट बना सकते हो ना, तो यू आर गुड इनफ टू बी हायर्ड. आई चेंज द डोमेन. हाँ यार, आई चेंज द डोमेन. दैट वन वॉज बिट लॉन्ग टू टाइप. दिस वन इज easy, manu.page. But I lost the source code as well, so I'll have to redo this project when I want to add new features. Okay, I guess guys, I'll have to end the stream in 2 minutes. But we'll connect back. We'll connect back. Do you use cursor? Yeah, cursor is good. I do use it. I also use it on a daily basis. I don't completely rely on cursor कि बस मैं अब जो भी कोड लिखूंगा कर्सर के थ्रू ही लिखूंगा. बट हाँ, आई यूज़ इट, आई यूज़ इट अलॉट. इस फ्रेमर मोशन यूज्ड इन इंडस्ट्री लेवल? हाँ, फ्रेमर मोशन इज़ यूज्ड. मेरा एक फ्रेंड है, उसने ही ऑल्सो लॉन्च्ड हिज ओन UI किट कॉल्ड मैजिक UI. तो इट्स ऑल ही ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ components फ्रॉम फ्रेमर मोशन. Thoughts on learning to code through reading documents without any videos? यार दैट्स बेटर देन वॉचिंग वीडियोज़, क्योंकि वीडियोज़ में ना शॉर्ट टर्म लर्निंग होती है कि यू जब तक वीडियो देख रहे हो कोड याद रहेगा अच्छा उसने कैसे लिखा, बट द मोमेंट यू स्विच टू समथिंग एल्स भूल जाते हो. डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोर लॉन्ग लास्टिंग. यस गणेश, यस, अगर ये बना सकते हो तो दैट्स गुड इनफ. If no one works on 6 months of grinded, is that checklist for remote offer? Yes. Thank you, sir, for your time and guidance. Thank you for joining and asking all these questions. Happy to help. Okay, I guess I'm not getting any more questions, but yeah, if there's anything, feel free to reach out on Discord and we can chat over there. Okay, cool guys, I'll see you next week. Okay.